Now, as we all know that as most cells are tiny, we have to observe them using a microscope. क्योंकि ये सेल्स बहुत छोटे होते हैं, दे आर टाइनी, दे आर स्मॉल, इसलिए हमें इनको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. An ordinary microscope can make objects appear bigger up to several hundred times through the use of lenses. और एक अगर हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो वो क्या करता है, उसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें बड़े नज़र आएंगे. It will make objects appear bigger up to several thousand times through the use of lenses. Lenses मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोप में, जिसकी वजह से साइज जो है 100 times बिगर होके हमें नज़र आता है. Here is a picture of light microscope. These all are parts of light microscope. First part is eyepiece. Second is objective lens. Third is a stage. Fourth is light source. Fifth is power switch. Sixth is base. Seventh, focus knobs. Eighth, stage clips. And the ninth part is arms. So what is the purpose of eyepiece? Eyepiece is where the eye looks into. यहाँ पे we will put our eye, जिसके थ्रू हम फिर ऑब्जर्व करते हैं आई पीस के थ्रू देखकर. Objective lens, as you can see, it is considered as objective lens, and the function of objective lens is to magnify the specimen. जो भी हम स्लाइड पे जो भी चीज़ रख के ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम जो है मैग्नीफाई करते हैं by the help of this objective lens. Stage. It is a place where we are going to put our slide. स्लाइड ऑब्वियस आप लोगों को नहीं पता होगा स्लाइड क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको ये आगे भी फर्दर एक्सप्लेन भी कर दूंगी. स्लाइड ग्लास की आपकी जो है मटेरियल की बनी हुई होती है, और उसके ऊपर स्टेन करके हम अपना कोई भी स्पेसिफिक स्पेसिमेन जो भी हमें ऑब्जर्व करना है, जो नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं हो सकता, वो हम उसके ऊपर प्लेस करते हैं प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, और वो स्लाइड ग्लास की यहाँ रखी जाती है ऑन स्टेज, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व इट. एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से हम उसे मैग्नीफाई करके आई पीस के थ्रू से देखकर ऑब्जर्व करते हैं. लाइट सोर्स, ताकि हमें क्लियर विजन नज़र आए. पावर स्विच का क्या फंक्शन होता है, ऑब्वियस है, जैसे दूसरी इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनमें जो फंक्शन होता है वही है. ये प्रेस किया जाता है पावर स्विच, ताकि माइक्रोस्कोप को जो है, लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो उसकी पावर ऑन हो सके. इट इज़ कंसिडर्ड एज बेस जो है बेसिकली शुड बी हेल्ड टुगेदर विद द आर्म व्हेन मूविंग अ माइक्रोस्कोप. तो इसकी वजह से हमें जो है हेल्प मिलती है. माइक्रोस्कोप अगर हमें मूव करना हो, सो वी शुड कीप इट स्टेबल. These are considered as focus knobs. Focus knobs are turned to get a sharp and clear image. अगर ब्लर नज़र आ रहा है हमें ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, क्लियर नहीं आ रही पिक्चर हमें आई पीस के थ्रू देखने से, तो फोकस नॉब से जो है हम फोकस जो है अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें जो है एक शार्प एंड क्लियर इमेज नज़र आए. स्टेज क्लिप्स, दीज आर कंसिडर्ड स्टेज क्लिप्स. सिल्वर कलर के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे. What is the function of these stage clips? These stage clips hold the specimen slide still on the stage. स्टेज पे जो हमने स्लाइड प्लेस की थी उसको होल्ड करने के लिए स्टेज क्लिप्स मौजूद हैं. एंड द लास्ट इज आर्म. आर्म शुड बी हेल्ड व्हेन मूविंग अ माइक्रोस्कोप. ओके, सो नाउ वी नो अबाउट ऑल ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप. The object to be observed is called the specimen.
here you can see here is a slide जिसमें हम अपना स्पेसिमेन जो है वो स्टेन करके रखते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं. इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड. ये माइक्रोस्कोप स्लाइड है, इसके ऊपर हम वो स्पेसिमेन रखते हैं विच इज़ देन प्लेस्ड ऑन दी माइक्रोस्कोप स्टेज. फिर हम ये स्लाइड माइक्रोस्कोप स्टेज पे रखते हैं. द फोकस नॉब्स आर टर्न्ड टू एडजस्ट द शार्पनेस ऑफ द इमेज, ताकि हमें क्लियर और शार्प इमेज नज़र आ सके. तो फिर हम फोकस नॉब्स को एडजस्ट करते हैं टू ऑब्जर्व अ मैग्नीफाइड एंड क्लियर इमेज ऑफ द स्पेसिमेन. And also if we are going to read this column, they are saying that in 1839 two scientists named as Skidden and Skowron proposed the cell theory. Cell theory दो scientists थे जिन्होंने propose की. The cell theory states that, और उस cell theory के according ये बात कही गई कि all living things are made from one or more cells. We have already discussed this key point that सब लिविंग थिंग्स मिलकर बने हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से. सेकेंड इज सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि स्किडन ने प्रपोज की, उसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई कि सेल्स जो हैं वो मौजूदा सेल्स की वजह से फॉर्म होते हैं. सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस लास्ट थर्ड पॉइंट एज वेल कि सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट्स होते हैं लाइफ के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. So now let's have a look at how we are going to make plant microscope slides. Materials that we need: microscope slides, alcohol wipes, cover slips, water, pipette, plants. We have taken some flowers and leaves to make slides. Now we are going to make the slides. First of all, you have to take these slides and wipe them. That is, we will clean them. We will clean these cover slips as well. Then place your sample onto the center of the slide. After placing the sample, we will add a drop of water to the slide and then cover it with the cover slip. As you can see, that's how slides are prepared. Continue making more slides like this. Now it's microscope time. When we observe flower petal slides, it appears like this. You can see the cells. There are many in number. Plant stem. These are leaves. After observing in microscope, they all are multicellular. And now we are discussing examples of unicellular organism. ऐसे organisms जो कि one cell से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं unicellular organism. Examples जो हम डिस्कस हैं उसमें bacteria. As you can see, the attached picture is of bacteria. We consider bacteria as microorganisms. It means that we can't see bacteria through our naked eye. We will use microscope to observe bacteria. Bacteria can be found in the soil, in water and in air. And bacteria may come in many different shapes and sizes. इसके shapes और sizes different हो सकते हैं. कुछ bacteria जो हैं हम human beings के लिए harmful होते हैं, जैसे कि for example if the food is not properly cooked, uncooked food हो या food ख़राब हो गया हो, that is rotten food. If we are going to eat such kind of food, it will make us sick.
The singular form of bacteria is bacterium, that is BACTERIUM, bacterium. बैक्टीरिया जो हार्मफुल होता है वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो, दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वॉश आवर हैंड्स एंड keep our body clean. Some bacteria are helpful to us, like for example bacteria in our stomach and intestines help us to digest food. That's why it is said all bacteria are not harmful for human beings. The next example that we are going to discuss now is a fungus, that is yeast. ब्रेड के ऊपर आपने कभी देखा हो अगर मॉइस्चर में रखें स्लाइस पे ग्रेइश कलर का कॉटन लाइक स्टफ आ जाता है. इट इज़ नोन एज लाइफ सेल्स. दीज लाइफ सेल्स आर बेसिकली फंगस. Fungi cannot make their own food. They feed on dead plants and animals. Basically, there are two types of fungus, microscopic and the second one is macroscopic. जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, is considered as microscopic organisms, and those fungus which can be seen through our naked eye are considered as macroscopic organism. Example is of mushroom. Mushrooms can be seen or observed with naked eye. So now if we are going to have a look at example of microscopic fungus types, example is of unicellular microorganism. Yeast जो कि हम यूज़ करते हैं बेकिंग में, जो पिज़्ज़ा आप बहुत शौक से खाते हैं, it is a very important ingredient for making pizza. It looks like this. If you are going to have a look at this picture, it is yeast used for baking and it is example of unicellular organism, and it is also used to add flavor to cheese. The singular form of fungi is fungus. It means that अगर बहुत सारी क्वांटिटी मौजूद है, एक से ज़्यादा मौजूद हैं, तो हम कहते हैं fungi, and if there is only one then it is said fungus. So singular form of fungi is fungus. Another example that we are going to discuss of unicellular organism is alga, that is green alga, and it is found in water and lakes. Here is the picture of alga and can be observed under microscope. Like plants, green alga basically captures light energy from sunlight and manufactures sugar to provide food. If there is blue-green alga is present in lakes, जिस पानी में स्विमिंग कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, अगर उस पानी में algae मौजूद है, then we human beings will become ill. और reactions क्या होंगे? Because of the presence of this algae, we will experience vomiting, stomach pain, diarrhea, and also skin rashes. Another example of unicellular organism is paramecium. Paramecium भी एक cell से बना है. That's why it is considered as unicellular organism. As you can see in the picture, there are thread-like hairs are present on the outer surface named as cilia. इसकी हेल्प से पैरामीशियम जो है मूव करता है. पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लियस होते हैं. Nucleus which is bigger in size is considered as meganucleus, while the another nucleus which is smaller in size is considered as micronucleus. Food vacuole, contractile vacuole, and rough endoplasmic reticulum is also found in the structure of paramecium. The attached picture is of amoeba. It is an example of unicellular organism which is made up of one cell only. The basic structure of amoeba have a nucleus, a food vacuole,
and a contractile vacuole is also found in the structure of amoeba. It is having irregular shape. The outer surface is known as cell membrane, which protects it. Nucleus is found inside the structure. Food vacuole is also found, and a contractile vacuole, which is blue in color, is also found. Amoeba eats tiny plants and animals present in pond water where it lives. Like structure, pseudopodia is also found. It is shapeless. The food particle will come near to the amoeba, as a result of which it will enter inside the amoeba. एंटर होने के बाद जो फूड पार्टिकल है वो ट्रैप होगा बाय द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल, और जो भी न्यूट्रिएंट्स उस फूड से मिलेंगे वो सब डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द बॉडी ऑफ अमीबा, दैट इज़ cytoplasm, which is found inside the structure of amoeba. That's how this unicellular living organism, amoeba, lives and survive by getting nutrients from food. Now your homework task is to read page number 5 and 6 of your science textbook. Secondly, you have to draw a proper labeled and colored diagram of an amoeba and paramecium in your science copy. I will send you another lecture video in which you will get to know that how you are going to draw it. So you have to draw proper label diagram of both unicellular organisms, that is amoeba and paramecium, in your science copy. Good luck.